everyone. Welcome to online lecture on copyright laws. Today's topic of discussion is copyright societies. Let us begin by understanding what is copyright societies. Copyright society is a legal body which protects or safeguards the interest of owners of the work in which copyright subsists. The copyright societies gives assurance to the creative authors of the commercial management of their works. सो कॉपीराइट सोसाइटी एक लीगल बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो इंटरेस्ट है कॉपीराइट ओनर्स के बाय प्रोटेक्टिंग एंड बाय चेकिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. The copyright societies gives assurance to the creative authors of the commercial management of their works. So by copyright society what they do, they give assurance to the creative authors, to the authors कि जो उनके कमर्शियल मैनेजमेंट, जैसे कोई भी अगर लिटरेरी बुक है तो उसका रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन होना, उसका पब्लिकेशन होना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको पूरा मैनेज करना, दैट इज under copyright societies. That is what copyright does. So copyright societies, they give assurance to the creative authors of the commercial management of their work. Now the authors of creative works, that is the owner of the copyright, they license a publisher to publish the work on a royalty basis. I hope this is clear. So this also leads to infringement of the work anywhere in India or abroad. Therefore, it is extremely difficult for the owner of the work to prevent from such infringement. So अगर कोई बुक है जिसका publication होगा through licensing, तो publication है तो there might be a situation जहाँ पे infringement हो, where unfair use हो कि कोई भी एक बुक लेके उसको हम ज़ेरॉक्स करके उसको हम कॉपी करें और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें illegally. So that is infringement, that is without the permission of the owner of the copyright, that is infringement. So इसको it is very difficult as far as a single author is concerned कि वो सारे जगह पे चेक करे कि कहाँ infringement हो रहा है, कहाँ infringement कैसे हो रहा है. There are so many districts, there are so many places in India itself जहाँ पे infringement होगा उनके work का. So it is very difficult for the owner on himself कि वो पता कर सके कि कहाँ infringement हो रहा है. So to overcome such difficulty, owners of copyright works, they have formed a society, and it is the society that grants license of the works for the performance or communication of the work to the public. और उसके बाद इसी difficulty को overcome करने के लिए owners of the copyright, what they have done, they have created a society, and that society will grant license of the copyright protected work. And then it is upon the copyright society कि वो check करे कि कहाँ infringement हो रहा है and take proper legal action. Now copyright society, it means a society that is registered under section 33 subclause 3 of the Copyright Act. So the society has to be registered, and that society's registration is done under section 33 subclause 3. So copyright society is a registered collective administration society that under section 33 of the Copyright Act. Such a society is formed by the copyright owners. Who forms the copyright society? Obviously the copyright owners will form the copyright society, and the minimum membership required for registration of a society is 7. So in order to get a copyright, in order to form a copyright society and get registration of the same, तो minimum number of members होने चाहिए उस society के, that needs to be 7. Now ordinarily only one society is registered to do business in respect of the same class of work. So as far as literary, dramatic and musical works are concerned, these are three separate class of works. So for literary work there is only one society that has to be there. For literary work, for musical work there is only one society that is there. But this is in general. However, exceptions are always there. A copyright society can issue or grant licenses in respect of any work in which copyright subsists, or in respect of any other right that is given by the Copyright Act. So I hope this is clear. The copyright society majorly grants licenses in respect of the copyright protected work. Now we have understood what is copyright society. Now let us understand in brief what are the functions of copyright society. Majorly these are the 4 functions of copyright society. The first is the copyright society can grant license of the copyright under section 30 in the respect of the work.
for its reproduction, performance or communication to public. So the first major function of a copyright society is to grant license. Now if a license is granted, then the second function is in continuation with the first function, that is to collect fees in pursuance of such licenses and also to distribute such fees among owners of rights after making deductions for its expenses. So once the license is granted, then obviously copyright society will receive fees from the third party. So it is upon the copyright society to collect those fees in pursuance of the license that has been granted and then distribute the fees among the owners of copyright only after deducting its expenses, the copyright society expenses. Now the third function is they are also authorized to watch out for the infringement of the copyright and take appropriate legal action against the infringers. So this is a very important function of copyright society, that is to watch out for the infringement of the copyright, और जहाँ भी infringement हो, they are entitled to take proper and appropriate legal action against the infringers. Now the fourth function is to perform any other function that is in consistence with the provision of section 35. So section 35 के अंदर there is control over the society by the owner of right. So उसके अंदर जो भी functions हैं under section 35, वो भी functions copyright society के अंडर में आता है. So these are the major functions of copyright society. Now we come to the statutory provisions. What is there in Copyright Act that is about copyright societies? To regulate the activities of copyright societies, section 33 to 36A have been enacted under Copyright Act. So section 33 to 36A talks about copyright societies. The first is section 33. What is this? This is registration of copyright societies. So no person shall be allowed to issue or grant licenses in copyright protected work except under a registration that is granted under subsection 3. Section 33 subsection 3. So we discussed in the first in the beginning that copyright society gets registration under section 33 subclause 3. So if a copyright society is registered, then it can only grant license once it gets registered. So apart from that, no person is allowed to issue or grant licenses in respect of the copyright protected work. तो कॉपीराइट सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाएगी अंडर सेक्शन 33 सब क्लॉज 3, तभी वो लाइसेंस ग्रांट कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर पर्सन इज अलाउड टू ग्रांट लाइसेंसेस. द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी विल कंटिन्यू टू हैव द राइट टू ग्रांट लाइसेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन वर्क्स विथ हिज ऑब्लिगेशन इफ एनी एज अ मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसाइटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अगर कॉपीराइट सपोज एक ओनर है कॉपीराइट का, उसने एक कॉपीराइट सोसाइटी बनाई और उससे अपने सारे राइट्स उसको दिए, कॉपीराइट सोसाइटी को दिए. नाउ द कॉपीराइट सोसाइटी हैज द राइट टू लाइसेंस और डू व्हाटएवर, जो भी उनको राइट मिला है कॉपीराइट सोसाइटी को. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी उसके पास अब कोई राइट्स ही नहीं बचे और वो अपने वर्क को किसी भी तरीके से यूज ही नहीं कर सकता है. So in spite of the registration of the copyright, in spite of making of copyright society, the owner still has in his individual capacity, still will continue to have the right to grant licenses in respect of his own work. So owner से copyright का protection, copyright का के अंडर जितने भी rights होते हैं owner से वो कभी भी जाते नहीं हैं. लेकिन there is somebody else also who can do to do actions as far as copyright में जितने भी सारे actions दिए हुए हैं जो अंडर आप कॉपीराइट एक्ट के अंदर आप कर सकते हैं, वो कॉपीराइट सोसाइटी भी कर सकता है एंड कॉपीराइट का जो ओनर है वो भी कर सकता है. Now central government shall register interested authors association of persons as a copyright society. However, ordinarily not more than one copyright society is registered to do business in respect of the same class of work. So who register copyright society? The copyright society gets its registration from central government, and central government shall register interested authors and association of persons as a copyright society. And ordinarily, generally in normal circumstances, एक society
copyright society gets registration in same class of work. So एक copyright society ही register होती है in respect of the same class of work. So this is discussed under section 33 subclause 3. Now let us discuss section 33 subclause 4. The central government, if satisfied that the working and management of a copyright society is detrimental to the interest of the owners of right, then the central government may cancel registration. So cancellation of copyright society is discussed under section 33 subclause 4. It says that कि अगर central government को ऐसा लगे कि जो भी कॉपीराइट सोसाइटी है उसकी वर्किंग या उसका मैनेजमेंट ऐसे हो रहा है जो कि कॉपीराइट ओनर्स के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है, उस सिचुएशन में एक आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन उस कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है. एंड सेक्शन 33 सब क्लॉज 5 सेज दैट if the central government is of the view that for the best interest of the authors and persons concerned it is necessary to immediately suspend the copyright society, then it can do so without prior notice to anybody, pending inquiry not more than 1 year. So section 33 subclause 4 said that कि central government registration को cancel कर सकता है but after a proper prior inquiry, और उसमें अगर प्रूव हो जाए कि जो कॉपीराइट सोसाइटी है उसकी वर्किंग सही तरीके से नहीं हो रही है या इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स को वो हैम्पर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी को कैंसिल कर सकता है. सेक्शन 33 सब क्लॉज 5 सेज दैट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि जो कॉपीराइट सोसाइटी है उसको इमीडिएटली उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना होगा, उस कॉपीराइट सोसाइटी को इमीडिएटली सस्पेंड करना होगा, नहीं तो जो पर्सन्स या ऑथर्स कंसर्न्ड है उनके राइट्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो वो विदाउट प्रायर नोटिस, बिना किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए, बिना प्रायर इंक्वायरी कंडक्ट किए, वो विथ इमीडिएट इफेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉपीराइट सोसाइटी को सस्पेंड कर सकता है. लेकिन जो इंक्वायरी है वो विद इन 1 ईयर, जो सस्पेंशन का जो डेट होगा उस डेट से विद इन 1 ईयर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्वायरी कंडक्ट करनी है. तो ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन में इंक्वायरी कंडक्ट ही नहीं होती है, सस्पेंशन में भी इंक्वायरी कंडक्ट होती है बट आफ्टर होती है. तो सस्पेंशन हो गया उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट होगी. सो दिस इज सेक्शन 33 सब क्लॉज 5. Now we have section 33A, that is tariff scheme by copyright societies. Now what is this? So every copyright society shall publish its tariff scheme in the manner prescribed. So जो कॉपीराइट सोसाइटी है वो इन इटसेल्फ वो अपने से अपना जो कॉपीराइट सोसाइटी है वो अपना टैरिफ स्कीम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड वो उनको बनाएगी और उनको निकालेगी. एंड एनी पर्सन, जो भी पर्सन उससे उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई हु इज अग्रीव्ड विद द टैरिफ स्कीम में अपील टू द कॉपीराइट बोर्ड, provided he shall pay to the copyright society as prescribed until the appeal is decided, and post proper inquiry may make such orders for removing the unreasonable element from the scheme. So 33A के अंदर copyright society has the power, has the right to make a tariff scheme on his own, of his own. So copyright society publish करेगा अपना tariff scheme, and there is a एक्सटेंशन टू दिस कि अगर टैरिफ स्कीम है और उससे कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो पर्सन उस टैरिफ स्कीम के अगेंस्ट अपील कर सकता है. किसको? कॉपीराइट बोर्ड को. सो देयर इज अ कॉपीराइट बोर्ड जो वो उसके अपील को सुनेगा. लेकिन कॉपीराइट सोसाइटी, और अगर कॉपीराइट बोर्ड को ऐसा लगा आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी कि देयर इज एक्चुअली एन अनरीजनेबल एलिमेंट इन द स्कीम, तो उस अनरीजनेबल एलिमेंट को वो रिमूव कर देंगे. So copyright board will remove the unreasonable element from the scheme. This is section 33A. So with this I conclude today's session. We will continue with further statutory provisions and various other points regarding copyright societies in the next class. Hope you all understood. Thank you very much. Have a nice day.